चाय नमः। श्री शिव महापुराणे कोटिरुद्र संहितायाम् अथ द्वात्रिंशोऽध्याय। सूतवाच हतं परं च घुष्मेशं ज्योतिर्लिङ्गमुदाहृतं तस्यैव च सुमाहात्म्यं श्रूयन्तामृषिसत्तमा दक्षिणस्यां दिशि श्रेष्ठो गिरिदेवे तिस्सञ्जकमहाशोभान्वितो नित्यं राजते दुर्दर्शना तस्यैव निकटे कक्षी द्वारद्वाजकुलोद्भवा सुधर्मा नाम विप्रक्ष न्यवसद्ब्रह्मान्वितं तस्य प्रिया सुदेहा च शिवधर्मपरायणा पतिसेवापरा नित्यं गृहकर्म विचक्षणा सुधर्मा च द्विज श्रेष्ठो देवतातिथिपूजका वेदमार्गपरो नित्यम् अग्निसेवापरायणा त्रिकालसन्ध्या युक्त सूर्यरूपसमद्युति शिष्याणां पाठकक्षैव वेदशास्त्रविचक्षणा धन्वांश परोदाता सौजन्यगुणभाजना शिवकर्मरतो नित्यं शैव शैव जनप्रिया आयुर्बहुव्यतीयाय तस्य धर्म प्रकुर्वत पुत्रक्षनाभवत्तस्य श्रुतुसयात्फलस्त्रिया तेन दुःखं कृतं नैव वस्तुज्ञानपरेण हि आत्मनस्तारक्षात्मात्मनः पावनक्षस इत्येवं मानसं धृत्वा दुःखं न कृतवांस्तदा सुदेहा च तदा दुःखं चकारा पुत्रसम्भवं नित्यं च स्वामिनं सा वै प्रार्थयद्यत्तन् साधने पुत्रोत्पादन हेतोक्ष सर्वविद्याविशारदं सोऽपि स्त्रियं तदा भर्तस्य किं पुत्रक्ष करिष्यति का माता क पिता पुत्र को बन्धुक्ष प्रियक्षक सर्वं स्वार्थपरं देवी त्रिलोक्यां नात्र संशया जानीहि त्वं विशेषेण बुद्धचाशोकं न वै कुरु तस्मदेवी तवया दुःखं त्यज नियम सुनिश्चितं नित्यं महातव्या नैव कथनीयं शुभव्रते एवं तां सनिवार्यव भगवधर्म तत्परा आसीत् परं सन्तुष्टो द्वन्द्वदुःखं समत्यजत् कदाचित् सुदेहा वै गेहे च सह वासना जगाम प्रिय गोश्चर्त विवादस्तत्र संगता तत्पत्नी स्त्रीस्वभावा च भतिर्सता स तया तदा उक्ता चेति दुरुक्त्या वै सुदेहा विप्रकामिनी पतन्युवाच अपुत्रिणी कथं गर्वं कुरुषे पुत्रिणी हाहम मद्रं भोक्ष्यते पुत्रो धनं ते कक्ष भोक्ष्यते नूनं हरिष्यति राजा त्वधनं नात्र संशया दिदेक्त्वां ते धनं धिक्तिमानं हि वन्ध्यके सूतवाच भतिर्सता ताभिरिति सा गृहमागत्य दुःखिता स्वामिनी कथयामास तदुक्तं सर्वमादरात् ब्राह्मणोऽपि तदा दुःखं न चकार सुबुद्धिमान् कथितं कथ्यतामेव यद्भावि तद्वेत् प्रिय इत्येवं च तदा तेन हाक्षस्तापि पुनः पुनः न तदा सा त्यजद्दुःखं हाग्रहं कृतवत्सो सुदेहोवाच यथा तथा त्वया पुत्र समुत्पाद्य प्रियोऽसि मे तक्ष्यामि हान्यथाहं चेदेहं देहभृतान्वर सुतवाच एवमुक्तं तया श्रुत्वा सुधर्मा ब्राह्मणोत्तमा शिवं सस्मार मनसा तदा ग्रहनिपीडिता अग्नेरग्ने क्षिपत्पुष्पं द्वयं विप्रोहातन्निन्द्रता मनसा दक्षिणं पुष्पं तं मेने पुत्रकामदम् एवं कृत्वा पनं पत्नी
मुवाच ब्राह्मणः स च अन्यो ग्राहमेकं ते पुष्पं पुत्रफलापते तया च मनसा धृत्वा पुत्र्यैव भवेन्मम तदा स स्वामिना यच्च धृतं पुष्पं समेतु माम् इत्युक्त्वा च तया तत्र नमस्कृत्य शिवं तदा नत्वा चागिनं पुनः प्रार्थय गृहीतं पुष्पमेककं स्वामिना चिन्तितं यच्च तद्गृहीतं तया न हि सुदेहा विमोहेन शिवेच्छासम्भवेन वै तद्दृष्ट्वा पुरुषैव निःश्वासं परिमोचयत् समृत्वा शिवपदाम्भोज अमुवाच निजकामिनीं सुधर्मोवाच निर्मितं चेक्षरेणैव कथं चैवान्यथा भवेत् आशां त्यज्य प्रिये त्वं च परिचर्या कुरु प्रभो इत्युक्त्वा तु स्वयं विप्र आशां परिविहाय च धर्मकार्यरतसो भूशङ्कर ध्यान तत्पर सासुदेहाग्रहं नैव मुमोचातम् मज्कामेया प्रत्युवाच पतिं प्रेम्णा साजिर्निर्मस्तका सुदेहोवाच मयि पुत्रो न चास्वत्तन्या पत्नी कुरु मदागया तस्या नूनं सुतिक्षेव भविष्यति न संशया सुतवाच तदैव प्रार्थितो वै स ब्राह्मणं शैव सत्तम उवाच स्वप्रियां ताच सुदेहां धर्म तत्पर सुधर्मवाच त्वदीयं च मदीयं च सर्वं दुःखं गतं ध्रुवं तस्मात् त्वं धर्मविघ्नं च प्रियमा कुरु साम्प्रतं सुतवाच इत्येवं वारिता सा च स्वमातुपुत्रिकां तदा गृहमानीय भर्तारं त्वेनामिदं जगो सुधर्मोवाच इदानीं वदसि त्वं च मति प्रियेयं तथा पुनः पुत्रसूक्ष यदा स्यादे तदा स्पर्धा करिष्यसि सुतवाच इत्युक्ता तेन पतिना स सुदेहा तत्प्रिया पुनः प्राह करो बद्ध्वा सुधर्मानं पतिं द्विजा नः स्पर्धा भगिन्या वै करिष्ये द्विजशतम् उपयच्छस्व पुत्रार्थमाज्ञापयामि च इत्येवं प्रार्थिता सोऽपि सुधर्मा प्रियया तया भूष्मा त्वां समुपायस्तं विधिना द्विजा ततस्तां परिनीयाथ प्रार्थयामास्त्वां द्विजा त्वदीयेयं कनिष्ठा हि सदा पोष्या नघे प्रिये उक्तवेवं स चाधर्मात्मा सुधर्मा शैव सत्तमा यथा योगं चकाराशु धर्मसङ्ग्रहमात्मना सा चापि मातृपुत्रीं ता सखीवत् पर्यवर्तत परित्यज्य विरोधं हि पुपोषा निरशं प्रिया कनिष्ठा चैव या पत्नी स्वनुज्ञां वाप्य च पार्थिवान् सा चकाराशु नित्येमोक्तोत्तरं शतं विधानपूर्वकं घुष्मासोपचारसमन्वितं कृत्वा तान् प्राक्षिपत्तत्र तडागे निकटस्थिते इमं नित्यं स चकार शिपूजा स्वकामदां विसर्ज्य पुनरावाह तत्सर्पयार्विधानता कुर्वन्त्या नित्यमेवं हि तस्या शङ्करपूजनम् लक्ष्यस्य चाभवत्पूर्णा सर्वकामफलप्रदा कृपया शङ्करस्यैव तस्या पुत्रो विराजत सुन्दरा सुभगक्षैव कल्याणगुणभाजना त्वं दृष्ट्वा परं प्रीतो स विप्रो धर्मवित्तमा अनासक्तः सुखं भेजे ज्ञानधर्मपरायणा सुदेहा तावदसस्यास्तु द्वारमुग्रा चकार स प्रथम शीतलं तस्या हृदयं हासि वत्पुनः तथा परं च यज्जातं कुत्सितं कर्म दुःखदं स्वाधन्यानि मनसा श्रूयतां तन्मुनीश्वरा इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थाकोटिरुद्रसंहितायां घुष्मेश्वर महात्म्ये सुदेहासुध
धर्माचरितवर्णन नाम द्वात्रिंशोऽध्याय। अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्याय। सूतवाच पुत्रं दृष्ट्वा कनिष्ठाया ज्येष्ठा दुःखमुपागता विरोधं स चकाराशु न सहन्तीत च तत्सुखं सर्वे पुत्रप्रसूतिं ता प्रशंससुनिरन्तरं तया तत्सा तेन शिशोरुपाधिकं तथा सुप्रियं तन्यं तं च पित्रो सद्गुणभाजनं दृष्ट्वा भवतदा तस्य हृदयं तपत् गिन्वत् एतस्मन्तरे विप्रा कन्या दातुं समागता विवाहं तस्य तत्रैव चकार विधिवच्चसा सुधर्मा घुष्मया सार्धम् आनन्दपरमगता सर्वे सम्बन्धिनस्तस्यां घुष्मायां मान्मादधु त्वं दृष्ट्वा सा सुदेहा हि मनसि ज्वलिता तदा अत्यन्तदुःखमापन्ना आहतास्मिति वादिनी सुधर्मा गृहमागत्य वधूं पुत्र विवाहितम् उत्सां दर्शयामास प्रियाभ्यां हर्ष्यन्यव अभवदर्शिता घुष्मा सुदेहा दुःखमागता न सहन्ति सुखं तच्च दुःखं कृत्वा दुविघुष्मावध दधुपुत्रो द्वदीयो न मदीयको वधूपुत्र च तां प्रीत्या प्रसूशस्युं मन्यत भर्ता प्रिया त्वां ज्येष्ठां च मेनेनैव कनिष्ठिकां तथापि स तदा ज्येष्ठा स्वान्तर्मलवती हा भूता एकस्मिन् दिवसे ज्येष्ठा सा सुदेहा च दुःखिनी हृदये सच्चिन्तयति दुःखशान्ति कथं भवेत् सुदेहोवाच मदीयो हृदयाग्निक्ष घुष्मानेत्रजलेन वै भविष्यति ध्रुवं शान्तो नान्यथा दुःखजेन हि अतोऽहं मारयाम्य तत्पुत्रं प्रियवादिनम् अग्ने भावि भवेदेवं निश्य परमो मम सुतवाच कद्यर्याना विचारक्ष कृत्याकृत्य भवेन हि कठोरप्रायशो विप्रा सा पत्नो भाव आत्मः एकस्मिन् दिवसे ज्येष्ठा सुप्तं पुत्रवधूयुतं चिच्छेदेन शीचाङ्गेषु गृहीत्वा छुरिकां च सा सर्वाङ्गखण्डयामास रात्रौ घुष्मासु तस्य सा नीत्वा सरसि तैत्रवाक्षिपदृप्ता महाबला यत्र क्षिप्तानि लिङ्गानि घुष्मया नित्यमेव हि तत्र श्रित्वा समायाता सुष्वापसुखमागता प्राप्तशैव समुत्थाय घुष्मा नित्यं तथा करोत् सुधर्मा च स्वयं श्रेष्ठो नित्यकर्म समाचरत् एतस्मिन्नन्तरे सा च ज्येष्ठा कार्यगृहस्य वै चकारनन्दसंयुक्ता सुशान्तहृदया नला प्रातःकाले समुत्थाय वधूशय्यां विलोक्य सा रुधिराद्रते खण्डेर्युक्तां दुःखमुपागता शुशुं निवेदयामास पुत्रस्ते च कतो गता शया च रुद्रराद्रावे दृश्यन्ते ते खण्डका हा हतास्मि कृतं केन दुष्टं कर्म शुचिव्रते इत्युच्चार्य रुरोधाति विविधं तत्प्रियस्य सा ज्येष्ठा दुःखं तदापन्ना हा हतास्मि कलेति च बहिर्दुःखं चकारासो मनसा हर्षसंयुता घुष्मा चापि तदा तस्या वद्भा दुःखं निशम्य सा न चालवृत्तात् समानित्य पार्थिवपूजनात् मञ्चैवोत सुखं नैव जातं तस्य मनागपि भर्तापि च तथैवासि ध्यावद्व्रतविधिर्भवेत् मध्याह्ने पूजनानन्ते च दृष्ट्वा शयां भयावहां तदापि न तदा किञ्चित् कृतं दुःखं हि घुष्मया हि नैव चाप्रत्यक्षायं स वै रक्षां करिष्यति भक्त्प्रियः स विख्यात कालकाल सतां गति यदि नो रक्षिता शम्भुरीक्षर प्रभुरेकला मालाकार इवासो यान्युड्डकते तान्विन्युन्नक्
भक्ति च अद्य मे चिन्तया किं स्यादिति त्वं विचार्य स न चकार तदा दुःखं शिवे धैर्यसमागता पार्थिवाक्षं गृहीत्वा स पूर्ववत्स्वस्थमानसा शम्भो नार्मण्युच्चरन्ती जगाम सरसस्तटे क्षिप्त्वा च पार्थिवांस्तत्र परावर्तत सा यदा तदा पुत्रस्तडागस्थो दृश्यते समतटे तया पुत्रुवाच मातरं हि मिलिष्यामि मृतोऽहं जीवतोऽधुना त्वपुण्यप्रभावाधिकृप्या शङ्करस्य वै सुतवाच जीवितं तं सुतं दृष्ट्वा भूष्मा स तत्प्रसूतिर्जा प्रहष्टा नाभवत्तत्र दुःखिता न यथा पुरा एतस्मिन्नसमे तत्र स्वाविरासीच्छिवोद्धृतम् ज्योतिरूप महेशक्ष सन्तुष्ट प्रत्युवाचः शिववाच प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूहि दुष्टया मारितोऽहायम् इनां च मारिष्यामि त्रिशूलेन वरानने सुतवाच भूष्मा तदा वरं वव्रे सुप्रणम्य शिवं नता रक्षणीया त्वया नाथ सुदेहं स्वसा मम शिववाच अपकार कृतस्तस्यामुपकार कथं तव्या क्रियते हन्या च सुदेहा दुष्टकारिणी भीष्मोवाच त्वदर्शनमात्रेण पातकं नैव तिष्ठति इदानीं त्वां च वै दृष्ट्वा तत्पापं भस्मतां व्रजेत् अपकारेषु यक्षैव हापुकारं करोति च तस्य दर्शनमात्रेण पापं दूरतं व्रजेत् इति श्रुतं मया देव भगवदाख्यं दुत्तमं तस्माच्च एवं कृतं येन क्रियतां च सदाशिवा सुतवाच इत्युक्तस्तु तया तत्र प्रसन्नोऽत्यभवत् पुनः महेश्वर कृपासिन्धु तामुचे भक्तवत्सला शिववाच अन्यद्वरं ब्रूहि भूष्मे ददामि च हितं त्वया त्वदक्त्या सुप्रसन्नोऽस्मि निर्विकार स्वभावता सुतवाच सोवाच त्वचा श्रुत्वा यदि देयो वरस्त्वया लोकानां चैव रक्षार्थमत्र स्थेयं मदाख्यया तदोवाच शिवस्तत्र सुप्रसन्नो महेश्वरस्थास्येत्र नाम्नः घुष्मेशाख्यं सुप्रदा घुष्मेशाख्यं सुप्रसदं लिङ्गं मे जायतं शुभम् इदं सरस्तु लिङ्गानामालयं जायतं सदा तस्मात् शिवालयं नाम प्रसिद्धं भुवनत्रये सर्वकामप्रदं हो तत् दर्शनात् तस्यास्तदा त्ववंशे शतं चैकं पुरुषावधि सुव्रते ईदृशा पुत्रका श्रेष्ठा भविष्यन्ति न संशया सुस्त्रिका सुधनाक्षैव स्वायुष्याक्षविचक्षणा विद्यावन्तो हा दुराक्ष भुक्तिमुक्तिफलाप्तये शतमेकोत्तरं चैव भविष्यन्ति गुणाधिका ईर्दशो वंशविस्तारो भविष्यति सुशोभना सुतवाच इत्युक्ता च शिवस्तत्र लिङ्गरूपो भवत्तदा घुष्मेशो नाम विख्यात सर्क्षैव शिवालयं सुधर्मा स च घुष्मा च सुदेहा च समागता प्रदीक्षण शिवस्याशु शतमेकोत्तरं दधु पूजां कृत्वा महेशस्य मिलित्वा च परस्परं हित्वा चान्तर्मल्लं तत्र लेभिरे परं सुखं पुत्रं दृष्ट्वा सुदेहा स जीवितं लज्जिताभवत् तौक्षमापयाचर निजपापहं व्रतं घुष्मेशाख्यमिदं लिङ्गमित्थं जातं मुनीश्वरा तद्दृष्ट्वा पूजयित्वा हि सुखं वर्धते सदा इति वक्ष समाख्याता ज्योतिर्लिङ्गावली मया द्वादश प्रमिता सर्व कामदा भुक्तिमुक्तिदा एतज्योतिर्लिङ्गकथां य पठेच्छृणु
यद्यपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो मुक्तिमुक्ति च विदन्दति इति द्वादशज्योतिर्लिङ्गमाहात्म्ये समाप्तम् इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थाकोटिरुद्रसंहितायां घुष्मेश ज्योतिर्लिङ्गोपति महात्म्ये वर्णन नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। व्यासुवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य सूतस्य च मुनीश्वरा समुचुस्तं सुप्रशस्य लोकानाहितकाम्यया। ऋषिर्षु सूत सर्वं विजानासि ततः पृच्छामहे वयं हरिक्षरस्य लिङ्गस्य महिमानं वद प्रभो। चक्रं सुदर्शनं प्राप्तं विष्णुनेति श्रुतं पुरा तदाराधन्नस्तात तत्कथां च विशेषता। सूतवाच श्रूयतां च ऋषिश्रेष्ठा हरीश्वरकथा शुभा। यदा सुदर्शनं लब्धं विष्णुना शङ्करात् पुरा कस्मिंश्चित् समये दैत्या सञ्जाता बलवत्तरा। लोकांस्ते पीडयामासुर्धर्मलोपं च चक्रिरे ते देवा पीडिता दैत्यैर्महाबलपराक्रमे स्वं दुःखं कथयामासु विष्णुत्वं निजराक्षकं। देवा ऊर्जु कृपा कुरु प्रभो त्वं च दैत्यसम्पीडिता भृशं कुत्र यामक्ष किं कुर्मः शरणं त्वां समाक्षिता। सूतवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा देवानां दुःखितात्मनां समृत्वा शिवपादाम्भोजं विष्णुर्वचनं ब्रवीत्। विष्णुर्वाच करिष्यामि च वं कार्यमाराध्य गिरिशं सुरा बलिष्ठा शत्रुवोः ते विजेतव्या प्रयत्नता। सूतवाच इत्युक्तास्ते सुरा सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना मत्वा दैत्यान् तान् दुष्टान् युद्धधर्म स्वकं स्वकं विष्णुरप्यमराणां तु जयार्थं भजिष्यवं सर्वमराणां धिपं सर्व साक्षिणम् अव्ययं गत्वा कैलासनिकटे तपस्तेपे हरि स्वयं कृत्वा कुण्डं च संस्थाप्य जातवेदसमग्रतः पार्थिवेन विद्यानेन मन्त्रेणानाविधैरपि स्तोत्रक्षेवाप्यनेकैक्ष गिरिशं चाभजन्मुदा कमले सरसो जातिर्मान् साख्यान्मुनीश्वरा बद्धद्वा चैवासनं तत्र न चचाल हरि स्वयं प्रसादावधि चैवात्र स्थेयं वै सर्वथा मयाम् इत्येवं निश्चयं कृत्वा समानर्च शिवं हरि। यदा नैव हरस्तुष्टो बभूव हरे द्विजा तदा स भगवान् विष्णुर्विचारे तत्परोऽभवत्। विचार्य वं स्वमनसि सेवनं बहुधा कृतं तथापि न हरस्तुष्टो बभूवोति खरा प्रभो। तथा सुविस्मितो विष्णुर्भक्त्या परमयान्विता सहस्रनामभिप्रीत्या तुष्टाव परमेश्वरं प्रत्येकं कमलं तस्मै नाम मन्त्रमुदीर्य च पूजयामास वैशम्भु शरणागतवत्सलं। परीक्षार्थ विष्णुभक्तस्तथा वै शङ्करेण कमलाना सहस्रातु ऋत्मेकं च नीरजं न ज्ञातं विष्णुना तच्च मायाकारणम् दुतं न यूनं तचापि संज्ञाय तदन्वेषन् तत्परा बभ्राम सकलां पृथ्वी तत्प्रीत्यै सुदृढव्रत तत्प्राप्य विशुद्धात्मा नेत्रमेकमुदाहरत्। त्वं दृष्ट्वा स प्रसन्नो भूशङ्कर सर्वदुःखदः आविर्बभूव तत्रैव जगाद वचनं हरिं। शिवोवाच प्रसन्नोऽस्मि हरे तुभ्यं वरं ब्रूहि यथेप्सितं मनोभिलषितं दधि नादेयं विद्यते तव। श्रुत्वाच तच्छ्रुत्वा शम्भुवचनं केशव प्रीतमानसा महाहर्षसमापन्नो हाब्रवीत् साञ्जलि। शिवं विष्णुरुवाच वाच्यं किं मे
त्वदग्ने वेहान्तर्यामी त्वमास्थिता तथापि कथ्यते नाथ त्वशासनगौरवात् दैत्यैक्ष पीडितं वृक्षं सुखो नो न सदाशिवा दैत्यान् हन्तु मम स्वामिन् स्वायुधं न प्रवर्तते किं करोमि क गच्छामि नान्यो मे रक्षका परा अतोऽहं परमेशानं शर्वं त्वां समागता सूतवाच इत्युक्त्वा च नमस्कृत्य शिवाय परमात्मने स्थितशैवाग्रतः शम्भो स्वयं च पुरुपीडिता इति श्रुत्वा वचो विष्णु देवदेवो महेश्वरा तदोतस्मै स्वकं चक्रं तेजोराशिं सुदर्शनं तत्प्राप्य भगवान् विष्णुर्दैत्यान्स्तान् बलवत्तरान् जघान तेन चक्रेण द्रुतं सर्वान् विनाश्रमं जगत्स्वास्थ्यं परं लेभे बभूवुः सुखिनासुरा सुप्रीता स्वायुधं प्राप्य हरिरासीन महासुखी ऋषिवृचु किं तस्मान् सहस्रं वै कथ्य त्वं हि शङ्करं येन तुष्टो ददौ चक्रं हर्ये स महेश्वरः तन्महात्म्यं मम ब्रूहि शिवसंवादपूर्वकं कृपालु त्वं च शम्भोर्हि विष्णुपुरपरि यथातथम् व्यासुवाच इति तेषां वचा श्रुत्वा मुनीनां भावितात्मनां समृत्वा शिवपदाम्भोजं सूतो वचनं ब्रवीदिति श्रीमहापुराणे चतुर्थकोटिरुद्रसंहितायां विष्णुसुदर्शन चक्रलाभवर्णननाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः।